नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जुड़ने के लिए मेरे साथ इस वीडियो एनालिसिस में। और आज हम देख रहे हैं कि मार्केट ने काफ़ी कोशिश की बट लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाए और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी बरकरार रहा। तो आज हमें क्या देखना है एक्सपायरी के पहले और मार्केट में सेटअप क्या बन रहा है और कैसे हम चाल चलेंगे, आए चलिए देखते हैं इनटू द मार्केट एनालिसिस, राइट। लेकिन अगर आप इस वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हो और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा। लेकिन सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहे और आपको पता चले कि मार्केट को कैसे एनालिसिस करना है। ऑलराइट, तो आइए चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और आपके सामने है, पहले हम सेक्टर का एनालिसिस कर लेते हैं। और the way the sector has moved for the entire day, right? The way the sector has moved for the entire day, you can see here none of these sectors have actually had a dominant effect. So, यानी the overall market sentiment has continued to be subdued and we are having challenges at higher levels. So, if you're going to take a look at the market condition और आपको देखना है कि मार्केट में काम कैसे करना है, तो आपको एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही अब तक रखना पड़ेगा। चलिए, ये ओवरऑल सेक्टर्स विल कंटिन्यू टू रिमेन दैट वे, बट देन हमें इस ओवरऑल सेक्टर के बेसिस पे काम कैसे करना है, एक्सपायरी के दिन क्या है इंपॉर्टेंट लेवल जिसे रखकर हम काम कर सकते हैं, वो जाकर देख लेते हैं। तो पहले हम चलेंगे निफ्टी के चार्ट पे और आज मैंने लिया है इंट्राडे चार्ट, ऑलराइट। और मैंने यूज़ किया है द कंसेप्ट ऑफ पिवट अलॉन्ग विथ सीपीआर। तो मैंने पूरे हफ्ते का सीपीआर लगाया है ताकि एक आइडिया मिल जाए। तो सीपीआर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे to give us a perspective of the trend. So what are we doing here is we are seeing that the CPR is slightly wide. It's not too wide, but it's slightly wide. और हम देख रहे हैं कि the CPR is giving enough push to the prices. So you can see here that after the move to the CPR, okay. So if you see here right now, you will see here that this entire rise went into R1. It took a dip at the CPR, and then you are seeing that the closing has gone above R1. So it is a good closing as we have ended ahead of expiry. But then what are the overall momentum setup saying? You can see here that on the lower time frame chart, you can see that the momentum is still struggling to cross the 60 level. So at the current juncture, overall sentiment is continuing to remain subdued. तो अभी हमें क्या देखना है कि yes, subdued जरूर है, लेकिन प्राइस एक्शन कह रहा है कि yes, अभी भी थोड़ी बुलिशनेस है और कोशिश जारी है, then momentum could pick up. So let's go and take a look at stock analyzer and find out what is the overall setup saying. So you can see here intraday is a strong buy that we all saw, but the multi-day and the positional are still not giving us a clue. So now what we'll do is we will go and as usual we will go and check what are the levels which we can look at because the scores are definitely indicating a positive sign. तो अभी हम जाकर देखेंगे कि क्या है वो important levels जिसे हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारे सामने आ गया है इंट्राडे और मल्टीडे का लेवल और हम डिप लेवल पर भी गौर करेंगे। तो राइट नाउ फॉर अस टू एक्शन, व्हाट यू कैन सी राइट नाउ ऑन द चार्ट, based on where Nifty is positioned, you can see that Nifty is clearly holding above the pivot zone. So this is the pivot zone 17,764. And you can see here that 17,664, 764 is close to the multi-day R1. तो यहाँ पर एक अच्छी खासी एक zone है। So as long as these levels are held, you can continue to expect that there could be an upside. So now the upside possibility, let us evaluate the upside possibility. So the upside possibility for tomorrow, first up, is coming towards 17,855. Okay. Yes, it's going to be a limited range expiry, so you have to be a little careful. So it's a very good market for the option writers because the market has continued to be in a range even though it has been showing a bullish bias. तो इस पर अभी हमें देखना है कि यहाँ पर हमें एक सप्लाई जोन मिल रहा है, ओके, एंड दिस पर्टिकुलर सप्लाई जोन इज टाइंग अप विथ योर मल्टी डे R2. तो मल्टी डे R2 पे यहाँ पर आपका सप्लाई जोन आ गया और नीचे की तरफ, ओके, नीचे की तरफ द इम्पोर्टेंट जोन विच आई एम सीइंग इज दिस विच इज 70,730. तो ये अगर तोड़ देता है, यू हैव गॉट अ ड्रॉप ऑन द वे टुवर्ड्स S3. Okay, this is your S3 level and S3 level is in tie up with your
मल्टी डे पिवट। तो अच्छी खासी एक क्लस्टर आ रही है। सो दिस कुड बी योर डिमांड जोन, ये हो गया आपका सप्लाई जोन, एंड एज लॉन्ग एज दीज लेवल्स आर मेंटेन्ड यू कैन कंटिन्यू टू रिटेन अ बुलिश पॉइंट। तो यहाँ पर जब ये आ जाता है, ओके, between 760 and 730, that is where you should start evaluating your position, and below 730 it is a good drop of around 80 points, which is good enough for a index trader in Nifty. अभी चलकर देखते हैं कि बैंक निफ्टी पे क्या हाल है। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी पे हम वापस चले जाएंगे इंट्राडे सेटअप पर, और इंट्राडे सेटअप काफ़ी मजबूत है बैंक निफ्टी का, और आप देखेंगे कि कोशिश जारी है। कैन सी हियर देयर वाज अ डिप, right, there was a dip and then it again moved up. So यहाँ से it went crossed R2, took a dip, good, R1 always acts as a very good support, और यहाँ से it has started moving up, and one of the primary reasons have been that the overall CPR has been narrow. So narrow CPR is very very powerful. It gives you a very good indication of momentum. तो यहाँ से narrow CPR की वजह से यहाँ पर एक अच्छी खासी push मिली है. And now the challenge is to the upside. So what is the upside which we can expect in the expiry, or also considering the week? You can target 43,000 to 43,100. So 43,000 to 43,100 is an expected target in the next 2 days. So which is I'm expecting, yes, it's not too much, but at the same time considering Bank Nifty, if Bank Nifty is very very strong, and there are some lot of positive triggers it could take up there, but at this current juncture हमारे पास उतने सारे positive triggers नहीं है, तो हमें ज़रा संभाल के काम करना पड़ेगा and go for some small portions in Bank Nifty. तो आइए चलिए देखते हैं कि why Bank Nifty is much better. When I take a look at the overall picture, okay, what I get here is a strong buy candidate. Okay, I got a strong buy candidate in Bank Nifty, and you can see here intraday, multi-day, positional, सारे में एक बाय अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हमें। तो व्हेन दैट इज हैपनिंग वी कैन डेफिनेटली कंसिडर व्हाट टू एक्शन, और यहाँ पर आपको अच्छी खासी लेवल्स मिल रही है कि एवरीवेयर इट इज शोइंग अ बुलिश साइन. So now when you go and take a look at the levels, right, when you go and take a look at the levels, what you have to target is, so let's look for some higher time frame here. Okay, let's look for some higher time frame and see if we are getting any kind of confluence at higher time frame. So what I'll do is I will take a look at the multi-day and positional to see if I'm getting a higher confluence, so that I can prepare myself for a longer play. So when I take a look at the multi-day and the positional, okay, when I take a look at the multi-day and the positional, what I find is a important cluster, okay, which is around 42,150. You can see here that this is a important cluster, okay, 42,150, which is close to this zone, right, 42,150. Now what you need to see is during the next 2 days, how is the movement going to happen? So what we spoke about is around 43,000, okay, 43,000 is a important zone to watch out for. So now यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया है कि वहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस आ रही है. You will also have, this is your R3, so which is a profit booking zone. तो वहाँ तक अगर आ जाएगी बैंक निफ्टी, you will definitely experience some bit of selling pressure there. It is also tying up with other cluster levels. So वहाँ पर एक reaction आ सकता है. So be alert. वहाँ से अगर if the momentum triggers to the upside, then more room opens to the upside, where you will have this as the next target, and you will have this. This will be your target number 1, and this will be your target number 2. Otherwise, at 43,000, it is your supply zone. So now let's see on the downside, how can we check out some pullback zone on the downside? So you can see here, this is around 41,900. Here we are not having any kind of suitable cluster levels at the moment. So what I would do is I would wait for a dip towards 42,000 to 41,900 as a demand zone to buy into Bank Nifty if it were to happen. Otherwise, along the way, you are not having any kind of important zones all the way till 42,200. So 42,200 and 41,900
are two important demand zones in Bank Nifty, while on the upside 43,000 continues to be a important supply zone. So these are the important levels which I wanted to share with you. And if you found these levels interesting, and if you found the kind of analysis which I've shared till now very useful, I would like you to go and like this video and also comment और बताइए मुझे कि और आपको क्या अच्छा लग रहा है इन दिस वीडियो एनालिसिस, और आप और क्या जानना चाहते हैं ऑन द इंडाइसेस which I'll cover in my upcoming videos, so that you also get a perspective and are able to trade the market in an efficient manner. Thank you for watching this video. This is Raja Venkatraman signing off. Have a good day, and do share this video in your social circles so that they know exactly how to analyze the market in a structured manner.